So hello guys, welcome back to our YouTube channel again. Okay, so आज हम लोग again वापस आ गए with a new topic of webinar for you guys. Okay, so last time हमारा graphics से related हुआ था. So जो आज का webinar है, it's all about 3D. Okay, and 3D में भी अगर आप textures एक part होते हैं 3D modeling के. ओके जो आपके मॉडल का लुक एंड फील डिराइव करते हैं ओके सो उससे रिलेटेड ही आज का टॉपिक है हमारा सो टॉपिक इज ऑल अबाउट क्रिएट टेक्सचर्स यूजिंग सब्सटेंस पेंटर एंड डिजाइनर पेंटर एंड हाउ यू कैन यूज इट एंड ऑल स्टफ तो वो सारी चीजें आज आपको पता लगेगी ओके सो आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ सो टुडे वी हैव अभिजीत सर ओके जिनको इंडस्ट्री में अराउंड 13+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है ओके इन्होंने बिग स्टूडियोज के साथ काम किया है एंड इन्होंने 2000+ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है एंड दे आर वर्किंग इन अ प्रोडक्शंस राइट नाउ ओके सो बिफोर calling sir today so let me just give you a short description about subscriptions okay so आप जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड उसी के साथ आपको एक बेल आइकन मिलता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट वेबिनार व्हिच वी गोना ब्रिंग ऑन नेक्स्ट सैटरडे ओके गाइस so without wasting time just a minute हेलो सर कैसे हो आप सर आपका माइक म्यूट है सर यस सर आई एम यस ऑल सर फाइन कैसे हैं आप सर एकदम ठीक सर आप कैसे हो ऑल गुड सर ऑल गुड सो सर आज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप बताएंगे कि आज का टॉपिक क्या है एंड जरूर रिलेटेड सो क्या क्या हम क्रॉस चेक करेंगे सॉफ्टवेयर में श्योर सो आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वी हैव गॉट 3D टेक्सचरिंग नाउ मेजरली यही रीजन है जिसकी वजह से एग्जैक्टली एनी मूवीज दैट वी वॉच उनके कलर्स और इतने अच्छे दिखते जो ऑब्जेक्ट्स एंड कैरेक्टर्स पे हम लोग जो अप्लाई करते हैं सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जहाँ पे वी क्रिएट मल्टीपल डिफरेंट टेक्सचर्स अभी इसे करने के लिए देर आर मेनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड विद टाइम हम लोग जो इवॉल्व हुए राइट फ्रॉम स्टार्टिंग यूजिंग फोटोशॉप आज हमारे पास कुछ 3D सॉफ्टवेयर भी है जैसे सब्सटेंस डिजाइनर एंड सब्सटेंस पेंटर बिल्कुल उसी पे मेरा आज का सेमिनार रहने वाला है सो ज्यादातर आई हैव सीन दैट सब्सटेंस पेंटर इज क्वाइट फेमस बट सब्सटेंस डिजाइनर पे ज्यादातर लोगों का फोकस नहीं होता सो उसी को आज थोड़ा सा मुझे इजी करना है सब लोग को समझने के लिए सो इवन दे कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ सब्सटेंस डिजाइनर सो दैट विल बी माय मेन गोल टुडे सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू गो अहेड विद दिस नाउ ओके ओके सो गाइस जैसा सर ने आपको बताया सो इट्स रिलेटेड टू टू सॉफ्टवेयर्स ऑफ सब्सटेंस ओनली डिजाइनर एंड पेंटर तो पेंटर तो आई होप जो लोग इंडस्ट्री में उनको सबको पता है व्हाट इज पेंटर इज कैपेबल ऑफ एंड ऑल स्टफ तो जैसे सर ने बोला अगेन कि डिजाइनर के बारे में कुछ लोग फेमिलियर नहीं होते सो डेफिनेटली वी विल टेल यू अबाउट डिजाइनर आल्सो एंड अबाउट पेंटर ओके सर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं आपको ऑडियंस के साथ लीव करता हूँ मैं आपको मिलता हूँ बाद में ऑल राइट थैंक यू वेरी मच सर Okay. थैंक यू Okay. टुडे आज हम लोग थोड़ा बहुत सब्सटेंस डिजाइनर एंड सब्सटेंस पेंटर दोनों के ऊपर फोकस करेंगे सो इनिशियली व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना स्टार्ट क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ टेक्सचर जो एक जनरेटर बनेगा सब्सटेंस पेंटर के लिए सो इफ यू ऑल नो व्हाट अ सब्सटेंस पेंटर इज आपको पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ इवन इफ नॉट डोंट वरी जस्ट फॉलो विद द सेशन आपको एक आइडिया आ जाएगा मेरा कहने का मतलब क्या है So, what are we going to do is, अब क्योंकि क्रिसमस नजदीक आ रहा है, I wanted to sort of create a gift wrap kind of a texture, जो हम सब्सटेंस पेंटर में ले जाकर आप आपके 3D मॉडल्स के ऊपर उसे अप्लाई करके अच्छे से एज अ टेक्सचर बना सकते हो. द पावर ऑफ सब्सटेंस डिजाइनर इज कि उसके अंदर हम लोग procedural textures बना सकते हैं. So procedural textures as in we start creating sort of nodes and that's where we create sort of a texture जिसमें हम अपने हिसाब से adjustments और सारी चीजें कर सकते हैं. So my main focus will be to start with very slowly and make you guys understand exactly a node वाला फंडा क्या है. To be very frank, we are all from the artistic side. It becomes very difficult कि ये node वाला concept हर एक को easy लगे, right? It takes time to actually understand the concept of using nodes. अब लेकिन हम लोग पहले के टाइम से देखने जाएंगे, eventually now things are turning into node system.
इस चीज को अगर हम लोग जल्द समझ लेते हैं अच्छे से, वी कैन रियली क्रिएट वंडरफुल आउटपुट्स. So I think we should start with the software now. So let's do that. मैं इसमें आपको एक flow से लेके जाऊंगा. And of course, after the session is over, I want every one of you all to at least, like, please comment in below saying that कि आपको और क्या देखना है इसमें. Like if you really want to have other more topics to be covered or anything. Of course, ये चीज़ आपको निहार सर भी बताएंगे, of course. But I'm just letting you all know. Please open up in your comments below and give your reviews. So let's start with the software now. I'll just open up. So this is a blank, empty substance designer with us. इसमें we will start with creating different things. अगर आप देखोगे ये substance painter से काफी different है. Okay. So what are we going to do is we're going to create a new graph. Now this new graph really have a whole system where we can create multiple types of graphs. अगर आप लोगों को PBR workflow के बारे में पता है, PBR का मतलब है physically based rendering, ये सारे टाइप के नोड्स हमें इसमें अवेलेबल मिलते हैं, ऑफ कोर्स सब्सटेंस पेंटर की तरह ही, बट यहाँ पे वी कैन क्रिएट मल्टीपल नोड्स. लाइक किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जो हम लोग ग्रे स्केल इमेज जिसको कहते हैं, वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू नॉर्मल्स इनसाइड द सॉफ्टवेयर इमीडिएटली. Being in the node system, of course it has its own power as well. So let's start by creating a very empty node and just understand what is the whole functionality of this software. इसका मैं power दिखाना चाहता हूँ आपको. So please follow along with me. If you all are at all trying to, like recreate something, I will go at a very medium pace so you all can follow as well. So first of all, we are going to create a new substance graph. That's what it is called as. Substance graph के अंदर we have to name, like let's name it as gift wrap or something. Everything that we have over here is the size of the texture that we want to export it out as. जितने भी node function के अंदर हम लोग काम करेंगे, every node जो हम लोग create करेंगे will be all at a very specific node resolution of the image जो हम पहले से choose करके रखेंगे. So it's going to be 2K for now, just for the sake of creating it from scratch. Output format will be absolutely relative to the parent. और अब हम जाएंगे और OK कह देंगे. So here we are. Let me just like solve these things for you, जहाँ पे आपको at least समझ में आ सके that what are we actually talking about, like the viewports and everything. Here you can see we have a working graph. ये बहुत ही ज़्यादा 2D स्टेप का काम है. यहीं पे majority graphs create होंगे for the nodes. और यहाँ पे हमारे पास है 3D model which we can really change to anything that we want. We have multiple options to change it to different settings. So that is absolutely for the very last thing जो हमें करना होगा. So once we have this, let's go ahead and create our first node. अगर आप ये हमारा वर्किंग एरिया है, लेफ्ट साइड में हमारे पास पैकेजेस मिलता है विच वी नीड टू सेव इट एज समथिंग, और उसके नीचे हमारे पास गिफ्ट रैप विच इज द नेम ऑफ द ग्राफ दैट इज गोना बी क्रिएटेड हियर. बिफोर हैंड लेट मी आल्सो एक्सप्लेन यू कि हम लोग करने क्या वाले हैं. वी आर गोना बी क्रिएटिंग सॉर्ट ऑफ अ ग्राफ हियर. इसको हम लोग प्रोसीजरल बनाकर वी विल टेक इट टू सब्सटेंस पेंटर एंड जस्ट अप्लाई इट ऑन एन ऑब्जेक्ट एज एन एग्जांपल. और वहां पे हम बनाए हुए यहाँ के सेटिंग्स को कितना कंट्रोल कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे. So let's go. So to create any new graph, we can do a right click, add node, and we have number of nodes here. Or else you can press the button tab, जिससे पूरा एक लिस्ट खुल सकता है, या फिर space bar. So there are some multiple ways with which we can actually bring up this list. उसके अलावा यहाँ पे left bottom में भी आपको पूरा list functions सारी चीजें मिल जाती है with which we will start creating a design. अब सबसे पहले ना इसके अंदर हमें चाहिए कोई specific design जिसको मैं लेकर I can start creating certain things. So let me do one thing. I have already some images with me which I have taken up. मैं उन सारे images को यहाँ पे click and drag drop करूँगा. You might not be able to see that, but simply मैंने web browser हमारे PC के browser से directly images को drag and drop किया है, जिसकी वजह से अब हमारे पास एक option है import resources और link resources. Link resources करने से जो images जहाँ है
उनकी उसी पोजीशन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. इफ यू मूव इट्स पोजीशन, इसका लिंक ब्रेक हो जाएगा. एंड इफ यू वांट टू कीप इट सेफ, you would rather want to import the resources, जिसके अंदर आपको एक पूरा लिस्ट आ जाएगा. Now these are the list of elements that I'm gonna import. इन सबको ओके कर देने से we sort of get all of these nodes. Nodes are always read from left of the screen to the right side. नोड्स हमेशा बहुत सारे कनेक्शंस के साथ आता है. इट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल. अभी फिलहाल मैंने एक सिंपल सा बिट मैप लिया है. अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है ना, यू विल रादर वांट टू प्रेस द बटन टैब और स्पेस बार एंड यू कैन टाइप इन बिट मैप. बिट मैप क्लिक करते ही इट विल आस्क मी इफ आई वांट टू like from file, if I want to import something or from a new resource. Eventually, if I click from file, it will take me to my folder wherever I want to go, and वहां से मैं यही सारे images इस तरह से one after the other लेके आ सकता हूँ. Now there are a few things that I want to make you understand. I will not be able to like teach the whole software. That's what the intention is here. I'm going to create something, but at least will explain you how the creation of this process really works. तो अभी मेरे पास यहाँ पे जैसे एक नोड है. इस नोड का अगर आप आउटपुट देखोगे, देयर इज ओनली वन नोड टू द साइड विच इज ऑफ अ स्पेसिफिक कलर एंड इट्स नॉट ग्रे. उसका मतलब अगर मैं उसके प्रॉपर्टीज के टैब में आता हूँ, whenever I click something it gives me an opportunity to change its properties or something. तो यहाँ पे कलर मोड है और एक ग्रे स्केल मोड है. What I'm gonna do is I'm gonna click on gray scale. इससे आगे फर्क पड़ेगा. I will definitely let you know. Similarly, I also have यहाँ पे another bitmap. I will just want to convert each and every one of them as a grayscale because इनके अंदर colors नहीं है. They are simply grayscale. Similarly, over here as well, I have grayscale. Now, what I want to take this ahead with is I'll want to give all of these designs a specific connection. अभी आगे जाने से पहले, let me also show you something. Every node, like this node, is absolutely empty as of now. Like there are no two indications showing something. अगर मैं इस पे सिंगल क्लिक करता हूं, उससे मुझे उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करके मिलती है जहां से मैंने कलर और ग्रे स्केल किया. बट सिमिलरली इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस, आपको नीचे की तरफ दिखेगा उसका एक 2D व्यू. ये 2D व्यू आपका हाईलाइट होएगा. अगर मैंने उस पर डबल क्लिक किया तो उसका इंडिकेशन आपको मिलेगा यहां से, विच इज अ चेकर मैप. सो फर्स्ट one click is for the properties and double click is for previewing it inside our so-called as 2D view. So once this thing is clear, we will now want to go ahead and start connecting these maps to something. अब इस केस के लिए मेरे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है called as tile generator. So if I click tab again or space bar, मैं यहाँ पे tile टाइप कर सकता हूँ. And we can go for a tile generator. This is the generator that I was talking about. It's quite interesting. इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है. Now it has a long list of settings you can really do with it. इसमें हमारे पास base parameters and attributes, ये दो चीजें हैं which are always common for every nodes. We will see हम कहाँ पे कौन सा use कर सकते हैं if our creation of this process really needs anything. So what I'm going to do is I'm going to minimize base material and attributes. Instance parameters में जाकर we can start increasing the amount of these patterns. This is almost like a proper grid जिसमें हमारे पास कुछ shapes दिए हुए हैं. Mind you, all of these nodes are of specific 2K. That's what we have mentioned. Well, if you want to change that, we can. Now, what happens is यहाँ पे मेरे पास कुछ amount है, so I can increase the amount of x and y. Of course, we are talking about 2D. जैसे ग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग, 2D व्यू की बात कर रहे हैं, वहां पे 2Ds मिलेंगे. That is 2 dimensions. Now, when I go for x axis, x amount, I can increase this amount as much as I want. और आप देखोगे बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में ये कन्वर्ट हो जाता है. Let's keep it as simple as 10 by 10 for now. Now, इसके नीचे हमारे पास है पैटर्न.
दिस पैटर्न थिंग विल रियली हेल्प यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपको इसमें कैसे टाइप के शेप्स चाहिए. सो वी हैव मल्टीपल डिजाइंस ऑलरेडी अवेलेबल विद अस जो प्रीसेट के नाम पे आता है. फर्स्ट इज द इमेज इनपुट. इसको मैं स्किप करना चाहूंगा बिकॉज इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे शेप्स है. जस्ट टू गिव यू अ लुक एट, हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है. नाउ स्क्वायर बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ वन पीस. आपको बीच में ग्रिड नहीं दिखेगा, बट गो फॉर द अदर वंस एंड यू विल सी दिस इज माय डिस्क. You can go for paraboloid, bell, and different shapes that we have to start with. इसका use बहुत ज़्यादा होता है. Like we use it a lot. We can definitely use it for much of the textures to be created to start with this. तो मैं जाऊंगा सबसे पहले image input पे. On going to the image input under the pattern category, you'll see that we have something called as pattern input number. यहां पे अब अगर मैं इस नोड के ऊपर से हाईलाइट करूं अभी के लिए, यू विल सी दैट वी हैव certain things like a node have some spots to the left, like there are two connectors and there is one plug over here to the right. लेफ्ट वाले प्लग्स जो भी है दे आर द लिसनर्स. तो मैं जो भी नोड इसके अंदर कनेक्ट करूंगा ये कंटेन करेगा उस इंफॉर्मेशन को एंड इट विल पास ऑन द इंफॉर्मेशन ओनली थ्रू एन आउटपुट नोड. कोई भी नोड हमेशा इसी तरह काम करता है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 3D और द नोड सिस्टम इटसेल्फ. So right now I can see on to the left there is written as pattern input 1 and background. I'm not worried about background as of now. What I want to do is कि मुझे ये सारे maps जो भी मैंने बनाए हुए हैं या फिर मैंने इनको जो फोटोशॉप में एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाकर जो लाया हूं यहां से, I simply want to connect them. The moment I connect into my pattern input 1, आपको दिखेगा मेरा टाइल जनरेटर. एवरी ब्लॉक दैट आई हैड इज नाउ replaced with the design that I have given it inside the pattern. जनरेटर पे क्लिक करने के बाद अब अगर मैं एक्स अमाउंट को अगर कम भी कर देता हूं, से फॉर एग्जांपल लाइक 5 by 5, you will see that the numbers are decreased and the image size has increased. So go for 2 by 2 and you will see the 4 images. So this is how we can play around with this. So I'll just keep it to 10 by 10 as of now. अब इसी जनरेटर में आई वांट टू ऐड ऑन मोर ऑफ द डिजाइंस दैट आई हैव, राइट. तो मेरे पास अभी टोटल में 5 एलिमेंट्स है जिसमें से मैं 4 कनेक्ट करना बाकी है. बट यू कैन सी दैट आई हैव पैटर्न इनपुट एज ओनली 1 राइट नाउ. तो एक नोड में कभी भी एक ही कनेक्शन जा सकता है. नाउ दैट टोटली डिपेंड्स इफ योर नोड कनेक्टर हैज कैपेसिटी ऑफ कनेक्टिंग मोर देन 1 डिजाइंस, देन वी कैन. अदरवाइज इट्स गोना बी जस्ट 1. इसके सामने आउटपुट विल नेवर हैव एनी सॉर्ट ऑफ अ लिमिट. आउटपुट एज इन कोई भी नोड आउटपुट अन नंबर ऑफ आउटपुट्स दे सकता है. सो इट कैन बी टोटल ऑफ लाइक एज मेनी एज यू वांट. यू कैन ऑलवेज स्प्रेड देम आउट. ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट डिजाइन. इफ आई वांट टू कनेक्ट, मेरे पास और कोई बटन नहीं है. सो द इमीडिएट थिंग दैट आई कैन डू इज अंडर माय इमेज इनपुट, जैसे मैंने अभी स्विच किया है फ्रॉम अ सिंपल ब्रिक, आई विल वांट टू स्विच इट its pattern input number that is below it, और इसे मैं increase करूंगा by 1. You'll see that by now the design has been broken. कुछ areas blank हो गए, but यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास pattern input अभी 2 हो चुके हैं. So there are 2 pattern input nodes now available with me. So I have got another space to like connect this design here. You'll see that it has been overtaken by those blank areas now. This new design has gotten in. सिमिलरली मेरे पास और 1 2 3 डिजाइन और है. लेट मी गो अहेड एंड डू दैट. सो आई हैव टू गो टू माय इनपुट नंबर एंड इंक्रीज दिस टू 5. नाउ आई हैव मोर स्पेस. ऑफ कोर्स यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल. वी हैव मल्टीपल स्पेसेस. तो अभी इनको हम लोग क्विकली जाकर कनेक्ट कर देते हैं. ऑलराइट, सो ऑल ऑफ देम हैव नाउ बीन कनेक्टेड. मेरे पास पैटर्न इनपुट 1 से लेकर 5 था, एंड दिस इज द 2D आउटपुट दैट आई कैन सी आई हैव राइट नाउ. सो ऑल द एलिमेंट्स आर इनसाइड दिस नाउ. नाउ द थिंग दैट आई वांट टू रियली डू इज इसको अप्रोच कैसे करना ना, उसका भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ. सब्सटेंस डिजाइनर इज मोर ऑफ लाइक द नोड्स थिंग. इसका मतलब है एवरीथिंग दैट आई एम गोना डू. मतलब अभी अगर मैंने टाइल जनरेटर भी अगर लिया है, देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैव टेकन दैट. और इसे अगर आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना है खुद के लिए, आई विल ऑलवेज सजेस्ट फर्स्ट
फाइनल आउटपुट क्या चाहिए वो पता होना चाहिए. दिस इज लाइक कॉमन टू एवरी कॉन्सेप्ट दैट वी रियली वर्क ऑन, either be it on 3D or 2D. आप फोटोशॉप में भी करो, whatever you do, डिजिटल पेंटिंग, मैट पेंटिंग, एनीथिंग, आपको पहले एंड प्रोडक्ट पता होना चाहिए. इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है. What exactly are we looking for? So I have something in my mind that I have to create something called as a gift wrap kind of a material. इस मटेरियल की एक like एक रेफरेंस को देखकर हाउ कैन आई ब्रेक इट डाउन टू द स्मॉलेस्ट और द इजीएस्ट पार्ट, और वहां से मैं आगे बढ़ते जाऊंगा. दैट इज हाउ इट वुड बी ऑलवेज लाइक beneficial for us to actually work on. So now what are we going to do is we are going to just select the output and go further on. बट पहले हम लोग सिर्फ स्टडी कर लेते हैं इस टाइल जनरेटर के अंदर और क्या क्या चीजें कर सकते हैं. अब ये जो पैटर्न के अंदर की बातें हैं, दिस इज एवरीथिंग दैट वी हैव इन हियर. इफ यू वांट टू रोटेट द फुल पैनल, आपका पूरा पैनल रोटेट हो जाएगा. सो वी हैव सर्टेन थिंग्स ऑफ रोटेशन ओवर हियर. रोटेशन फिर रैंडम के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं. यू कैन सी दैट माय डिजाइंस आर रैंडमली बीइंग रोटेटेड ईदर 90 डिग्री और 180 डिग्री, व्हाटएवर दैट may be. This is the random function. Similarly, I'm not going through all of them. Of course, there are too many of them. Everyone have their own requirement as well, like reasons है उसके पीछे. We can scale everything up or down however we want. अब scale के अंदर भी random दिया हुआ है. So remember one thing, आप कभी भी कोई भी वैल्यू को अगर आप स्केल करते हो ना, तुरंत उसके ऊपर एक एस्टेरिक मार्क आ जाता है. When you change the value from its default value, you will always get this asterisk mark. हमेशा इसी स्केल, अभी जैसे मैंने स्केल की वैल्यू को चेंज किया, सो इट्स गॉट एन एस्टेरिक मार्क. यू कैन ऑलवेज गो बैक हियर टू रीसेट द प्रॉपर्टी, सो इट गोज बैक टू its original value that it was before. So this becomes sort of easy for us to go back when things goes as what we have not desired to be. तो यहाँ से मैं scale value बढ़ाकर I can give some random scale to these properties. Okay. So that's how this is going to be. मुझे फिर से इस पे भी स्केल रैंडम अभी फिलहाल देने की जरूरत नहीं है. आई वांट दिस टू बी लाइक जस्ट अ फ्लैट डिजाइन ऑन अ रैपर दैट इज यूजुअली लाइक रिसेंबल्ड एज अ गिफ्ट रैप फॉर क्रिसमस टाइम, समथिंग लाइक दैट. इसके नीचे पोजीशन है. नाउ दिस इज ऑल हैपनिंग इनसाइड आवर टाइल जनरेटर. रिमेंबर, अगर आपको देखना है मैं कौन से प्रॉपर्टी में काम कर रहा हूं, उसी के टॉप में, ये प्रॉपर्टीज के टॉप में, यू विल गेट द नेम ऑफ द नोड ऑन विच वी आर वर्किंग ऑन. अब यहाँ पे मेरे पास ऑफसेट है. द मोमेंट आई स्टार्ट मूविंग द ऑफसेट, एंड पे जाके कोई फर्क नहीं दिखने वाला. दैट्स बिकॉज द ऑफसेट इज वर्किंग इन बिटवीन ऑफ द टू थिंग्स, दैट इज फर्स्ट एंड द लास्ट वन. Okay, though it has a total different pattern now, but by going to 0.5, मैं इसको diagonal settings में रख सकता हूँ. Now you can see that things are aligned but in a diagonal format and an inclination towards one side. So again, I can either go and reset this thing altogether, or if I really liked it, तो मैं इसे 0.5 पे रखना चाहूँगा, and I will keep it, of course. Why not? Now remember, everything that I'm doing here is totally changeable even later. तो अभी फिलहाल इन सारी चीजों को परफेक्ट अलाइनमेंट में नहीं रखते हुए, जस्ट गेट योर नोड्स इन प्लेस फर्स्ट. दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज टू हाउ यू आर बिल्डिंग स्टफ. हम लोग कहते हैं ना, पहले ब्लॉकिंग किया जाता है. अगर आप लोग बैकग्राउंड अगर आपका है 3D मॉडलिंग और या फिर 3D का अगर आप स्टडी कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स यू वुड नो. बट इफ दिस इज समथिंग दैट यू हैव ओनली हर्ड अबाउट, और अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो, डोंट वरी टू इट. देयर आर टू मेनी थिंग्स इनटू दिस दैट कैन रियली मेक थिंग्स इजी फॉर यू इफ यू अंडरस्टैंड इट इन द राइट वे. यहाँ पे रोटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है which I can always use. Again, there is random rotation to this as well. Perfect. I'll just keep it to some random figure. I'm not keeping it as a specific one. Now once I'm done with this, इसके अंदर luminance भी है. Now you can see that some things are getting brighter and some things are getting darker. Nonetheless, I'll just go here and just walk up front as it is रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे I'm gonna go ahead and start creating certain things. याद रखना यहाँ पे अल्फा का कंसेप्ट भी है. Right now the black color is what I have and white color is the design that we have. So it's sort of an alpha map right now. यहाँ से अब मुझे क्या करना है? I want to fill up my background with a sort of a texture that I'm thinking of. It's like white and red stripes. That's what I want. So let's go ahead and create that. उसके लिए मुझे यहीं से सब connections निकालने की जरूरत नहीं है. I can create something else now. What I'm going to do is I want to fill up the background with a texture. Now let's create that texture first. So for that, what I'm going to do is I'm going to take up another tile generator this time.
अब इस टाइल जनरेटर का ना मुझे थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज करना है. आई वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अमाउंट ऑन द एक्स वैल्यू फर्स्ट, लाइक से अराउंड 30 to 50 के बीच में कहीं पे भी, एंड जस्ट मूव इट टू सम रैंडम नंबर. लेकिन अमाउंट वाई में इट्स ऑलवेज गोना बी 1. सो दिस इज हाउ आई कैन सी द टेक्सचर राइट नाउ. ये मेरे पास एक स्टैंडिंग पट्टी जैसी चीजें आ चुकी है. Now, inside this pattern, like I showed you about the same properties, of course, these properties are absolutely same in both of them. मैं अगर यहाँ पे चले जाऊंगा तो वही मैंने आपको बताया था, इसमें लुमिनेंस है. इसी कैटेगरी में नीचे there is something called as checker mask. If I just turn that on, it gives me alternate black and white stripes. What I want to really do is मुझे इसके ब्लैक कलर पे रेड कलर या फिर व्हाइट कलर पे रेड कलर देना है, जस्ट सो आई कैन क्रिएट अ टेक्सचर व्हिच गोस विद व्हाइट एंड रेड कलर बोथ. तो यहाँ पे अगर मुझे कलर नोड पे यूज करना है, आई हैव समथिंग कॉल्ड एज यूनिफॉर्म कलर. राइट नाउ एवरीथिंग आई एम टाइपिंग हियर, अगर आपको एक बार उसके लोगोज अगर समझ में आ जाएंगे, लाइक द डिजाइन दैट इट शोज अस व्हाट इट इज व्हाट, आपको अगर एक बार वो डिजाइन समझ में आ गया, यू हैव सम ऑफ द मोस्ट यूज्ड डिजाइंस ओवर हियर. आप डायरेक्टली यहीं से उसको क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हैं. सो यू हैव गॉट मल्टीपल वेज दैट यू कैन एक्चुअली यूज दिस. अब इस नोड को सिलेक्ट करते, अगेन यू कैन सी द डिफरेंस, इट इज कलर्ड. दैट मींस दिस हैज अ कलर आउटपुट which can go into some other color output only. जबकि यहाँ पे ये जो आपको ग्रे कलर दिख रहा है, this is a gray scale, so it needs to like be connected with another gray scale. That's how nodes really work. What I really want to do is I want to blend them both together. I want to change this color to red, just because Christmas आप कोई भी color choose कर सकते हो. It's not limited to only one color. I'd like to go ahead and just like sort of click on blend, and I will click on output. That's going to be the color. अब इस मैप को, जैसे मैंने आपको कहा, दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एन अल्फा, राइट. सो मैं इस ब्लेंड नोड के अंदर आई हैव समथिंग कॉल्ड एज ओपेसिटी. ओपेसिटी रियली वर्क्स ऑन ब्लैक एंड व्हाइट कलर ओनली. सो वट एवर इज ब्लैक इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट और इट्स वैल्यू इज 0, और जो भी व्हाइट है वो ओपेक हो जाएगा ओपेसिटी के हिसाब से, एंड विल गेट द नंबर ऑफ 1. So I'll just connect this grayscale to the opacity, and you will see now we have white and black color. So black color is considered as black. Opacity में वो transparency का काम करेगा. I hope you're getting what I'm saying. And white color पे अब red color अभी दिख रहा है. Similarly, if I want to like apply this another color to the black color as well, we can do that absolutely. उसके लिए ना हमारे पास यहाँ पे एक चीज होगी called as invert mask. This will give me the opposite sides. अब ये हो गया ना, यहाँ पे इसी मैप को अगर मैं कंट्रोल D कर दूं, I can get a duplicate of the same node with almost same settings. Everything is going to be just the same. All I need to do is go here and click on invert mask. अब ब्लैक कलर वो है जहां पे यहाँ पे मेरे पास रेड कलर है, और जो यहाँ पे रेड कलर है वो यहाँ पे व्हाइट कलर है. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना क्रिएट अनदर यूनिफॉर्म कलर, कंट्रोल D, and I'm gonna give this thing as a white color. आप directly इस color के ऊपर select करके you can select the white color and you're done. You've got a white color now. और इन दोनों को भी मैं एक दूसरे blend node के साथ connect करना चाहूँगा, where this becomes my main color and it has this as an alpha. So that's how we have got two colors now. One is red and one is white. अब इन दोनों भी nodes को we can blend it again. So blend is something that we use over and over again, but you can really create some wonderful effects using this. तो अब मैं इन दोनों के बीच में एक और blend node डालना चाहूँगा, and I will connect both of them onto one of the colors here, and you can already see the output has been ready for us. It's ready. अब इसी में the best part is मैं इनवर्ट ग्रे स्केल भी यूज कर सकता था. नाउ ओके फाइन, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. नॉट एन इशू. सो हियर आई हैव गॉट द बैकग्राउंड रेडी विथ मी. अब उसी के ऊपर मुझे इस इमेज को बिठाना है जो मेरे पास यहाँ पे है. दिस इमेज नीड्स टू बी ब्लेंडेड विद दिस अगेन. लेट्स ट्राई एंड सी क्या आउटपुट निकलता है. लेट्स कीप गोइंग ऑन विद द डिजाइन दैट वी आर क्रिएटिंग. बट राइट नाउ इसे अगर मैं अल्फा पे डाल दूंगा, हाउ डिड आई चेंज दिस? आप शिफ्ट प्रेस करके रखो, node पे selection दे दो, and once you click and drag, it's gonna come out along with it.
अब आप इसको कहीं और कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. सो दिस इज एन ईजी वे ऑफ स्विचिंग. मैं अभी ये चीज आपको निकाल कर यहाँ पे कनेक्ट करते हुए नहीं बता रहा. आई एम जस्ट शोइंग इट बाय स्विचिंग. सो दैट्स हाउ आई हैव स्विच्ड बिटवीन द डिफरेंट नोड्स. So I can put that in the background and I can have this connection here. अब आपको दिख रहा है मेरे डिजाइन जो लोगो सैम्पल्स के थे, दैट इज व्हाट इज कलर्ड नाउ. बट आई रियली डोंट वांट टू कलर माय एलिमेंट्स. आई वांट टू जस्ट हैव अ सॉलिड कलर ऑन माय एलिमेंट. दिस पैटर्न हियर नीड्स टू बी द बैकग्राउंड. इसे बैकग्राउंड करने के लिए व्हाट आई विल हैव टू डू इज, ये मेरा इमेज जो अभी दिख रहा है इज ब्लैक एंड व्हाइट. व्हाइट इज ओपेक, ब्लैक इज ट्रांसपेरेंट. इसी रीजन से उसने ओपेसिटी में इस चीज को उल्टा दिया हुआ है जैसा मुझे चाहिए था. सो व्हाट आई एम गोना डू इज सिंपली गोना क्रिएट अनदर नोड आउट ऑफ दिस कॉल्ड एज इनवर्ट ग्रे स्केल, एंड दिस इज गोना कंप्लीटली इन्वर्ट द होल डिजाइन फॉर अस. तो इसे अब जब मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, यू विल सी दैट माय आउटपुट नाउ रियली हैव दिस टाइप ऑफ एन इफेक्ट. और जैसे हमने इनको रैपर का डिजाइन क्रिएट करने के लिए जो नोड्स का यूज मैंने किया था, वही सेम फंडा मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ. लेट्स जस्ट नेम दिस. देयर इज अ वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ लाइक नेमिंग थिंग्स इन दिस सॉफ्टवेयर. तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस पर राइट क्लिक कर सकता हूँ. आई कैन गो टू क्लिक ऑन एड फ्रेम. एड फ्रेम करने के बाद इट विल गिव मी द ऑप्शन टू चेंज दिस नेम, नॉट हियर बट इन माय प्रॉपर्टीज टैब, एंड आई विल कॉल इट एज माय गिफ्ट. If not the whole name, then wrapper texture, or whatever you want to call it as, or wrapper design, however you want. Once this is there, once this is done, I have my elements here, and everything that is coming out from is black and white over here. Inverted use करना होगा, मैं कभी भी यहाँ से use कर सकता हूँ. So I've got two things ready. अब मुझे ये लोगोस जो मेरे एलिमेंट्स है इनको भी कलर करना है, तो उसके लिए यही मैप काम आ जाएगा, जस्ट लाइक वी डिड इट फॉर दिस. सो आई एम गोना यूज अनदर कलर नोड फर्स्ट, यूनिफॉर्म कलर, एंड आई एम गोना हैव अ ब्लेंड नोड. तो यहां पे जाकर मैं ब्लेंड दे दूंगा. अब देखोगे उसने बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में कनेक्ट किया हुआ है. आई डेंट वांटेड दिस इन द बैकग्राउंड, आई वांट दिस इन द अल्फा. और यूनिफॉर्म कलर, I need to select some sort of a color for that. तो अभी के लिए मान लो मैं येलो कलर ले लेता हूँ. This is absolutely changeable even later on. So we don't really have to work on what exactly needs to be the color. ये हम लोग बाद में change कर सकते हैं. But I've got a certain type of an output now. अब इसी को मुझे इस डिजाइन के ऊपर जो ब्लैक एरिया है वहां पे बिठा देना. So in order to do that, I can again go ahead and blend these both together. So this is going to be the blend as a foreground and this needs to be my background. अब ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मेरा इमेज आ चुका है ऊपर, बिकॉज द ब्लैक कलर इज अगेन एज अल्फा. तो जब मैंने इनको ब्लेंड किया हुआ है विदाउट इवन गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ अ ब्लेंडिंग मोड, जो अगर आपको फोटोशॉप कंफर्टेबल है, इफ यू नो अबाउट फोटोशॉप, यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट ब्लेंडिंग मोड इज. ब्लेंडिंग मोड में यू कैन हैव मल्टीपल ऑपरेशंस लाइक ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड सो ऑन. इसकी ओपेसिटी के साथ भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं. दिस इज माय टॉप लेयर, फोरग्राउंड, and background is my back layer, which is the logo design. So I've got the design with me already. Now it's absolutely fine. अभी मुझे ना फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा black हो गया है ऊपर नीचे, which I can totally change with very simple steps. So let's do one thing. I will just change the way that I have handled these things. Now it's absolutely okay. At times क्या होता है ना, हम जैसे जैसे बनाते जाते हैं, we understand that some nodes could have been made easier, or maybe I have like used a hard technique. मतलब ज़्यादा nodes लगाकर मैंने कुछ output निकाला. So I can always go back and just change that. Right now what I've done is just to bring you back to where we were. इस डिजाइन के हिसाब से मैंने इस डिजाइन का सेम कॉपी लिया हुआ है, बट उसमें मैंने इन्वर्ट ये दिया था, मास्क, इन्वर्ट मास्क दिया था. That is over here, invert mask. If the same thing I do it with some other node, maybe I would prefer that. जैसे इसी नोड में से if I bring in something called as invert grayscale, तो ये भी वही सेम चीज करके देगा. और इसे जब मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा in my output, my output should not change, and it's still not changed. The only thing is we have some certain type of a white color border at the very top and the bottom.
इस चीज को अगर सॉल्व करना है, all we need to do is just create a new node called as transform. This transform node will help you to like sort of sketch, stretch, skew or rotate your shapes that is connected with it. तो अब सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्म नोड में इसके अंदर से बाहर निकलने वाले जितने भी आउटपुट्स हैं, आई विल क्लिक ऑन शिफ्ट, click on the node and connect it to the 2D output. Now, what I've taken is a transform 2D. इसके अंदर जब मैं gray input दूंगा, my node turns into a gray node automatically. Now, what I've done is, मैंने ये gray scale करके क्या फायदा किया पता है? That now if I like just simply go ahead and like sort of change these values, it's not gonna affect my design at all. सारी चीजें हो जाएगी. तो अब मैं अगर अपना फाइनल आउटपुट देखूंगा, इट्स स्टिल द सेम, इट्स स्टिल द सेम, एवरीथिंग इज स्टिल द सेम. इनफैक्ट वी हैव गॉट रिड ऑफ दोस हाइलाइट्स इन द टॉप एंड द बॉटम. ये मैंने कैसे किया? मेरे पास जो एक नोड था उसी का डुप्लीकेट लेकर आई प्रिफर्ड चेंजिंग इट फ्रॉम हियर एज अ मास्क, लाइक इन्वर्ट करके. But then I realized that if I really want to change this design, rather I will take a copy of it and transform it. मैंने उसको invert grayscale में convert करके I made it as the opposite design of what I wanted. तो मुझे मिल गया मेरा output. Similarly, I have got my final output. अब यहाँ से मैं बहुत सारी चीजों को create कर सकता हूँ. Before going forward, I will want कि मैंने अभी ये जो design बनाया है, इसी के अंदर मैं एक sort of normal connect कर सकता हूँ. So I'll take a normal map. Now this normal really supports a grayscale value. Grayscale value मेरे पास जो ये डिजाइन है उसको लेकर मैं कर सकता हूँ आगे connect directly. So now my normals is generated. Now this is the process which is so wonderful. If the similar thing, if you want to do in some other software, you might require an additional plugin sort of a thing. But Substance has got this for us now. It's a wonderful tool. तो डायरेक्टली उसने ब्लैक एंड व्हाइट इमेज से नॉर्मल्स इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया. In fact, not only this much, it can also give you an option to use it as OpenGL or DirectX. Okay, this is wonderful. This is most of the graphics computing style, which different software requires OpenGL and some software requires DirectX. So we can get that out. अब वैसे ही इस इंफॉर्मेशन को मैं फाइनल लेवल पे लेके जाता हूं. आई हैव क्रिएटेड एन आउटपुट दैट इज आउटपुट नोड. मुझे इसे फाइनली खत्म करना है, राइट? सो एज ऑफ नाउ इफ यू सी माय एक्सप्लोरर हियर, मेरे पास एक पैकेज है जिसके अंदर एक ग्राफ है गिफ्ट रैप नाम का, और जितने भी मैंने टेक्सचर्स यहाँ पे कनेक्ट किए हुए थे, दे आर ऑल अंडर वन फोल्डर कॉल्ड एज रिसोर्सेज. Now what I need to do is, ये normal map बन चुका है. I am gonna export everything out to Substance Painter. And in order to do that, what I'm gonna do is, I'm gonna click and connect an output node to this. Now output node is what is gonna be dependent on giving me an output image at the end. इस output को नाम देना बहुत जरूरी है. It needs to have a proper identifier. I'm gonna call this as normal. I'm going to label it as normal as well. This is just for the sake of giving it a proper name. और यहाँ पे हमारे पास usage है जिसके अंदर I will add this file as a specific normal image. So every software now knows कि जब ये format image को मैं जब import कर रहा हूँ, it has normal information into it. All 3D softwares, in fact all the 3D softwares will identify it as a proper normal image. And then we are just gonna move on to the other things. अभी यही normal image आपको अगर यहाँ पे देखना on my 3D object, आपको इसे right click करना है, drag and drop it on the 3D model here, and make sure you are assigning it to normal. Now you will start seeing the output here very well. Okay. अब उसका intensity कितना होना चाहिए is totally up to us. You want it as OpenGL or as DirectX, you totally have the options with you. So अब अगर मैं लाइट्स को मूव कर रहा हूँ, okay, how am I doing this? If this is your question, control shift and right click and you'll be able to move it. So that's how you can really work. अब मैं 0 पे चले जाऊंगा, it will come out to this, and if I bring it out, it's going to be like so. I've just got this a little bit of an effect. Otherwise, ये जो मेरा color output है, this is the final design. मैं इसी डिजाइन को अब लेके जाऊंगा, एक आउटपुट नोड कनेक्ट कर दूंगा.
और ये जो मेरा फाइनल डिजाइन यहाँ पे बना है, आई विल वांट टू अप्लाई इट ऑन माय मॉडल एज अ बेस कलर. तो अब ये मेरा आउटपुट जो है इज गोना बी नेम्ड एज बेस कलर एज वेल. Now we are going to enter into a very interesting step. This is very common in as to how we are applying materials to our 3D model, but now we need to also understand the further concept. ये होने के बाद मैं जाऊंगा add items. I'll click on base color again, and this is going to be an sRGB information, of course. इस पे अब मैं एक लेवल का फाइल पे आ चुका हूं. इफ दिस इज माई फाइनल आउटपुट, वेल एंड गुड, मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ. बिकॉज इसके ऊपर अगर मुझे कुछ और चाहिए, लाइक इट नीड्स टू बी अ लिटिल बिट शाइनी और समथिंग, एक्सक्यूज मी. अब मुझे अगर इसके ऊपर एक शाइनी आउटपुट अगर कुछ चाहिए ना, आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना कॉल इन फॉर अ कलर शाइन. के लिए रफनेस में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. रफनेस में जितना वाइट कलर होगा, दैट विल बी वन थिंग. I'll just keep this as grayscale because I need only the float value, that is black and white. मैं जितना ब्लैक की तरफ जाऊंगा ना, उतना शाइनी हो जाएगा. लेट मी डू दिस एक्चुअली अगेन. आउटपुट नोड कनेक्ट करेंगे एंड विल कॉल दिस एज रफनेस. रफनेस में कनेक्ट करने के बाद आई एम गोना नेम इट एज अ रफनेस चैनल. And I'm going to give this as a linear information because इसमें कोई RGB information नहीं है. So it's going to be linear. इसी रफनेस मैप को मैं राइट क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट पे जब ड्रॉप करूंगा, आई विल कॉल इट और कनेक्ट इट विद वन ऑफ दीज प्रॉपर्टी एंड वी विल हैव रफनेस ओवर हियर. सो नाउ व्हाट आर वी डूइंग इज, मैं इसके कलर के हिसाब से डिसाइड कर सकता हूं हाउ मच शुड इट बी ऑफ अ रफ प्रॉपर्टी या फिर कितना शाइनी होना चाहिए. नाउ यू कैन सी इट्स टोटली ग्लॉसी. It's very glossy. You can see the whole HDRI moving. High dynamic range image. Okay. So it's what very shiny. तो इसी में जब मैं इसकी वैल्यू को जितना ग्रे करते जाऊंगा, it will start giving me a better effect. Now it looks very flat. It gives me a total value of either shiny or roughness. तो इसे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, बाय द वे मेरा नॉर्मल्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है. आई जस्ट वांट टू यूज इट अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ इट. इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए. सो व्हाट आई एम गोना नाउ डू इज, इसी के वैल्यू को थोड़ा सा और इंप्रूव करने के लिए आई कैन मिक्स इट विद डिफरेंट थिंग्स. जैसे मैं इसे मिक्स कर सकता हूं. आई कैन कनेक्ट इट यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ अ मैप दैट वी हैव. हमारे पास यहाँ पे ग्रंज मैप है. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स व्हिच कैन बी क्रिएटेड. Say for example, if I take this type of an image and if I connect this to my roughness, you will understand what I'm trying to say. यहाँ पे अब आपको इसका इफेक्ट क्लियरली समझ में आएगा एज टू हाउ इट्स बीइंग शाइनी एंड हाउ इट्स बीइंग रफ इन बिटवीन. तो जितना वाइट एरिया है दैट इज गोना बी रफ बिकॉज मैंने उसको रफनेस को कनेक्ट किया हुआ है. ब्लैक इज गोना बी द ऑपोजिट, दैट्स ग्लॉसी पार्ट. तो अब ये थोड़ा सा नेचुरल टाइप्स का इफेक्ट लग रहा है. दिस माइट और माइट नॉट बी योर रिक्वायरमेंट, सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये मिक्स करना है तो कितना. Of course, हमारे पास इसके अंदर खुद के प्रॉपर्टीज भी है, like how much balanced you want. It's gonna go to one color. This is balance less. Is gonna go towards the black color, and white. If I turn it full balance, it's gonna be totally white. तो इसके बीच में भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है. Done. I have done my thing. इसी तरह से मुझे इसके ऊपर एक वैल्यू चाहिए था. That's it. और ये मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन बन चुका है. Now I want to carry on this information towards Substance Painter. This is where the interesting part now starts. Just to brief up with you guys what we have done, just to let you all know again, हम लोग ने elements लिए. These elements can come from anywhere. Photoshop में कर लो आप, या फिर Illustrator में कोई डिजाइन बना लिया, whatever that may be. Once we have got those elements, हम लोग ने उसे tile generator पे connect कर दिया. And remember, tile generator में हमारे पास inputs, pattern inputs बढ़ाने के options है. तो मैंने सभी को pattern पे connect किया हुआ है. Background is empty. I have taken that information and I have, like sort of created multiple things. Not multiple things, I'll let you know what exactly we created it for. But tile generator मैंने अलग से लिया उसका background texture बनाने के लिए, जो हमें already यहाँ पे दिख रहा है. We connected these maps and we got sort of different colors with it. मैंने color uniform color के साथ blend किया हुआ है.
एंड रिमेंबर, ये जो मेरा ट्रांसफॉर्म 2D या फिर मैंने जो टाइल जनरेटर लिया है, दैट इज कनेक्टेड एवरीवेयर एज एन ओपेसिटी. लेट मी ऑल्सो टेल यू, शिफ्ट करके अगर मैं इसे क्लिक करके इफ आई ट्राई टू कनेक्ट इट ओवर हियर, इट विल नॉट वर्क. बिकॉज एक अगर मैंने उसको कलर नोड अगर दिया हुआ है, इट कैन नॉट कंबाइन और ब्लेंड वेल विथ द डिजाइन ऑफ माई कलर इंफॉर्मेशन. तो मुझे कलर इंफॉर्मेशन नहीं देना है, इसके ऊपर मुझे देना है प्रॉपर ग्रे स्केल वैल्यू ओपेसिटी में, और कलर इंफॉर्मेशन देना है टू द ब्लेंड अपर टू वैल्यूज, दैट इज फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड. Similarly, blend का output color information ही है, not grayscale. That's why we have just gone ahead and mixed all the values together. तो एक को मैंने रखा normal, that is this, where the first color over here is white and then black. इसी को फिर मैंने red color दे दिया, so all the white color has changed to red color. Similarly, I mixed white color with my inverted image. So now what was white is now black, so it has got the color of the opposites. और यहाँ पे मेरे पास एक फाइनल इमेज क्रिएट हो गया, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ. इससे मेरा रैपर रेडी हो गया. नाउ दिस रैपर कैन बी फर्दर ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू समथिंग एल्स. जैसे यहाँ पे मैं इसके साथ मिक्स करूं उससे पहले यहाँ पे I can go ahead and give something called as transform 2D again, and you will see that वो seamlessly उसके साथ attach हो जाता है. ठीक है, मैं यहां पे आकर इस इमेज को रोटेट कर सकता हूं. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू वोंट सी एनी सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकेज हैपनिंग, बिकॉज ये जो टेक्सचर्स अभी हम लोग देख रहे हैं आर ऑलवेज इन द मोड ऑफ ऑटो टाइलिंग. टाइलिंग मोड के अंदर यू विल सी दैट एच एंड वी टाइलिंग इज ऑलवेज ऑन. Okay, so here this is why we can see that it is being tiling. और अब मैंने ये थोड़ा सा टेढ़ा करके I sort of gave it a little bit of a personalized design. Nothing else. It's totally up to us how we want this. तो finally ये डिजाइन जब बन गया, I mixed it with the logo that I have created here. इसी के ऊपर मैंने कलर इंफॉर्मेशन भी डाल दिया. So I wanted these designs to be properly colored. I gave an invert grayscale so that my design can be applied exactly where I want. Now once I have given the color, मैंने इन दोनों के साथ blend कर दिया where both the end objects or end nodes were color information. Going on, मैंने उसे एक base color के साथ connect कर दिया, and this was then applied with a right click drag onto the object. Now I have got 3 output elements with me. मैं इन सब के ऊपर right click करूंगा, add frame कहूंगा, and I'll call them as outputs. So that's how I have my outputs here, and these are all the working files in between. ये मेरा wrapper texture है. Now wrapper texture really needs to be including of these nodes as well. Just a second, I'm gonna expand. Yeah, तो मैं इनको move करके कहीं और रख सकता हूँ. और ये सब मेरे elements हैं which I've got it from outside. So I'm going to right click and click on add frame. I'm going to call it as elements. Done. All right. ये रहे मेरे maps. Now what I want is, I want to take this to Substance Painter, but before going there, I want certain controls that I can take along with me. जैसे कि आपको दिख रहा है इसका final image ये है. I can't really change these values, any of the values from here, right? Exactly, to cope up with these things, I can really go here and just see which properties I really want to carry on to the final output. तो इसके लिए अगर मान लो टाइल जनरेटर में हम लोग जाते हैं, we have this x amount and y amount that we have already kept it to 10. Say for example मुझे इसे कंट्रोल करना है, अभी नहीं बट बाद में करना तो पड़ेगा. I want that freedom कि जब इसे मैं सब्सटेंस पेंटर में लेके जाऊं, I don't know what object am I gonna apply it on, और उस पे शायद मुझे इसका टाइलिंग बढ़ाना या घटाना हो सकता है. Now comes the important part. X amount and the Y amount needs to be created or exposed as a tool now. तो इसे मैं जैसे ही X amount के सामने जो ड्रॉप डाउन है उसे अगर मैं expose as new graph input करूं, it's gonna ask me what I want. अब ये मेरा पैटर्न है, और या फिर मैं इसे मेरा एलिमेंट्स कह देता हूं. सो एलिमेंट्स अमाउंट कितना बढ़ाना है कितना नहीं वो कंट्रोल यहां से होगा. And इसे मैं pattern, sorry, I'll call it as element only. Element amount
कितना बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए वो यहाँ से मैं उसे नाम दे रहा हूँ. आई एम जस्ट गोना नेम इट एंड आई एम गोना क्लिक ऑन ओके. इट हैज गॉन. मैं अब एक्स वैल्यू को यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकता. आई लेट यू नो. Y amount, similarly, I will go and give it using the existing number. I can go for elements amount. So next time when I take this up, मेरे पास इसका एक parameter create हो जाएगा. So we are sort of creating manual parameters from where we can connect them. Similarly, मेरे पास यहाँ पे information है color का. What if I do not want this color later? मेरे scene setup के हिसाब से this color really doesn't go. I want to change it. We'll definitely go to uniform color properties. और उसमें भी जाके output color के सामने we have an option called as expose new graph. So this is going to be the same thing for everything that we want. So this is going to be my element color. So we know that this color is going to change the property of my element designs color. So element color, we're just gonna simply name that. Done. वैसे ही और कौन से प्रॉपर्टीज है जो मुझे शायद चेंज करना होगा. विल कीप वर्किंग ऑन दैट. अब यहाँ पे मेरे पास है दिस वाज द जनरेटर दैट आई हैड क्रिएटेड. दिस इज नॉट गोना चेंज एज सच. वेल आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर. यहाँ पे भी मेरे पास कुछ कलर प्रॉपर्टीज है जिसको मैंने रेड एंड व्हाइट दिया हुआ है. वो कलर प्रॉपर्टीज को भी मैं एक्सपोज कर दूंगा एज माई पैटर्न color 01. Okay, I'm going to use the same name, so control C and control V to the label as well, और इसे OK कर दूं. Similarly, ये white color के ऊपर जाकर we will click on expose color. This is going to be my expose pattern color. I'll rather just paste it with the second value. Paste it with the number 2. So now we have got two properties over here. और क्या चेंजेस हो सकते हैं? जस्ट एक्सप्लोर योर ग्राफ एंड स्टार्ट विजुअलाइजिंग एज टू कि मुझे कौन से चीजों के ऊपर और कंट्रोल चाहिए होगा वंस आई टेक दिस टुवर्ड्स अ सब्सटेंस पेंटर सॉफ्टवेयर. हो गया, ये चीज हम लोग ने कर ली. कंसिडर आई जस्ट वांटेड टू लाइक सॉर्ट ऑफ मे बी इसी के जनरेटर में आई वांट द प्रॉपर्टी द कंट्रोल दैट इफ इन केस आई वांट टू रोटेट दिस, इफ आई वांट टू लाइक मूव इट, इसको शायद स्केल करने की जरूरत पड़ गई. ये सारी चीजों को भी मैं एक्सपोज कर सकता हूँ इंडिविजुअली. सो आई एम गोना एक्सपोज दिस. इट्स गोना बी माय एलिमेंट स्केल यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म रख सकते हैं. यूनिफॉर्म एंड आई एम गोना नेम दिस सेम थिंग ओवर हियर एज वेल, और मैं इसे ओके कह दूंगा. सिमिलरली स्केल रैंडम वाला प्रॉपर्टी भी मुझे एज अ प्रॉपर्टी ये चाहिए, स्केल रैंडम, बट दिस इज गोना बी एलिमेंट scale random. Control A, Control C, tab, and I'm going to paste it here as well. I'm going to click on OK. Once this is done, what about offset? Do you want this to be controlled as well? Well, of course, why not? Right? If you are going to really be working with this texture, we want all sort of power that we can have in our hands, ताकि हम उसको बाद में पेंटर में जाके दोबारा सब्सटेंस डिजाइनर में आने की जरूरत ना पड़े. So we'll rather just use that. तो position offset है. I'm going to use it for element again. मैं बार बार element नाम इसीलिए डाल रहा हूँ because मेरे पास pattern भी है. That is texture. So be more precise and name it accordingly. So you just know exactly how we are doing. Okay. So now we will go for offset random. I think this is not required for me, at least it's not required. मुझे फिर भी rotation जरूर चाहिए, and for rotation I have random rotation and full rotation. So I want this to be exposed as well. So we'll go for the rotation. This is going to be my element rotation. Control A, Control C, tab and paste. And this is going to be again exposed as rotation random for element. Control A, Control C, and paste it again. Okay. So I'm done. I've created multiple different designs using all these options we have. Once this is done, well, all we need to do is, first of all, of course, ये package को save करना बहुत जरूरी है. So press the button Control S and just save this file, like the right folder. So I'm going to call it as giftwrap.sbs. I've saved the file. This time, what I want to do is right click and click on publish.sbsar. This is where I'm going to take this file to my substance painter. तो यहाँ पे मैं क्लिक करके I'll just like
It's going to ask me for generate missing icons. It might or might not generate. It's absolutely okay. We are still going to click on publish. It might take a few seconds. You will just see things being exported. Okay, it's generating a thumbnail. I'm sorry. It's generating a thumbnail for us. But actually cancel it. It's not that important. If it's going to take too long, I will cancel it. Yeah, let's cancel it. Fine. So even if it must have, मैं फिर से उसे एक बार publish जरूर करूँगा. And I'm gonna say publish. Do you want to replace it? No. Then if it's okay, we have already published it. Now going on to our next software, I will just represent the screen because it might not be visible to you guys. Just a quick second. Stop screen, and I present my screen. That's gonna be share screen, and I will want to share my software. Here it is. Okay, I need to keep this on. Substance Painter. There we are. So now we have switched to Substance Painter. I will just simply open up a file that is going to be my recent or simple. Let's take up an example, sample file first. Open sample, and we have something called as meat mat. This guy, default file. I'm gonna take away everything. Just gonna leave its head out. I simply want to show you exactly how we can bring in the textures here and start working with it. And for us to start doing that, it's as simple as just going to the layers, remove any layer that exists right now. और अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे एक नया fill layer ले लेंगे. Going to the fill layer, just name it whatever you want to. इसके properties में जाकर, not even properties, right click and click on add generator. Going to the add generator, we're going to click on the generator. यहाँ पे हमें सारे generators मिलते हैं. So if we want to get our file here, we will need to follow a process, and that is going to the file, import resources, add resources, and just link to the file where we want to go for. जैसे यहाँ पे मैंने उसका फाइल एक्सपोर्ट किया था, we also have .sbsar, so we'll need to take this up. Gonna call it as a generator. यहाँ से मैं उसे जनरेटर कह रहा हूँ. याद रखना, जनरेटर से मुझे वो सारे उसके पैनल्स एंड कंट्रोल्स मिल सकते हैं. I'm just gonna select anything that is current session as of now. I'm not setting up as a project or anything. अब आपको यहाँ पे उसका gift wrap दिख जाएगा. Exactly, that's what we are gonna do. Now take up a fill layer again. Like you must have already done this. इसी के ऊपर राइट क्लिक करो, या फिर यहाँ से आप क्लिक करके उसके ऊपर एक जनरेटर असाइन कर सकते हो. I'm so sorry, this is not for that. Generator, add generator, and click on the generator with the design that where you can see if it's called as gift wrap, and voila, we've got it here. So अब इस पे मुझे वही सेम सारे प्रॉपर्टीज मिल रहे जो भी मुझे चाहिए थे, बट द प्लस पॉइंट इज वी हैव सेट अप न्यू patterns or the options that we wanted to play around with right over here. अगर मेरे पास पैरामीटर्स में यहाँ पे सीड में रैंडम है, इट्स रियली गिविंग मी ऑल सॉर्ट ऑफ रैंडम ऑप्शंस बिकॉज इट्स अ जनरेटर. अगेन रिमेंबर, मैंने जितने प्रॉपर्टीज दिए उसके हिसाब से इट्स ट्राइंग टू एडजस्ट और रीएडजस्ट द थिंग्स. एलिमेंट का मैंने अमाउंट कहा था आपसे, so we can literally change the amount of these designs. I can make them bigger or smaller. I can go to the size and create this uniform scaling if I want to. I can go to element scale random, with which we can have some random scaling. Right. We also have position, with which we can move around things. Right. Similarly, we have rotation panels also over here, with which we can create certain effects. Element rotations. This is the power of Substance Designer, जो हम लोग Substance Painter के अंदर लाकर कर सकते हैं. So with this, we can change really almost anything. You can change the colors as well. Like say for example, I change this to green, or I change this to blue. I change keep red as it is, and I just
like sort of change the color to green or something. Maybe I'll just change the whole look of this design. इसे शायद मैं थोड़ा सा गोल्डन काइंड ऑफ इफेक्ट दे सकता हूँ, तो वैसा कुछ. इट्स लाइक possibilities are endless. You can always just select any sort of a color. Cool. Now there are multiple many things that you can really do with this, but this was with one example. I really wanted to try to give you all an idea to how to like create things inside Substance Designer and then switch it to Substance Painter and start applying it on your personal models. And you can really see that it fits all fine. Right. So this was a short presentation that I had prepared for you guys. I hope कि आप लोगों को ये process समझा होगा. By heart करने की जरूरत नहीं, but if, of course एक understanding आया होगा as to how to like bring things from designer to painter. So if you have any questions, of course you all can put it up on the comments below if there is an option to do that. Otherwise, I think I'm done. So moving forward, you all Yes, sir. have any sort of questions related to this, do let me know. Yes, sir. So that was a nice session, sir. Okay. So many things are cleared. I think so. The viewers have enjoyed that thing, that you have explained the things Of much course. better in Substance Designer. Like you have explained the notes which you're gonna use further and all stuff. Okay. So there is one question over there, sir, by Chirag. So I will just show you on the screen. So Absolutely. he's asking, sir, there are two types of materials in Substance Designers also, like related to he's asking, like we have Max and Maya, we have different type of materials like AI standard, Lambert, and all stuff. So is there Uh-huh. any things related to that in Substance Designer? So he's asking related. Yeah, so this is actually basically for texture creation. So materials is something to do very specific with 3D softwares. So if you ask to create sort of glass effects, you're not gonna get it over here. So that is very different because materials are something decided where a 3D software is. So if you're using V-Ray, you will have materials for V-Ray. Arnold, you have AI standard surface and all. So not in this process, you will find those type of materials, but here you will get a PBR workflow with which you can create materials with all those maps, which goes into those materials inside 3D software. So yeah, we don't have specific materials for this. I hope that answers the question. Yeah, sorry. I think so. Today my internet is lacking now. I don't No know problem. why. There's something going on in Andheri, I think so. So yeah. So I hope Chirag, your questions has been clear to you. Have you got the answer and all stuff? So again, the sir has repeated. I will also repeat that thing again. जो sir ने आपको पूरा process सिखाया, just go through that. Okay. And substance designer थोड़ा सा या आपको अभी इंटरफेस दिखा होगा, थोड़ा देखने में डरावना लगता है. It looks scary, Hmm. scary at that time. बट एक बार आप वो नोट सीख गए, देन यू विल बी द फैमिलियर थिंग विद दैट, क्योंकि आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज के साथ प्ले करना पड़ता है. दैट्स द थिंग ओनली. ओके. सो जैसा आज सर ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उठाया, वैसे ही आप पिक कीजिए. पहले आप प्रॉपर्टीज को समझिए, देन जो आपका लेवल है फिर आप थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए. बट स्टार्टिंग में आपको एज अ बेस आप ट्राई कीजिए. Okay, and then obviously we will bring some advanced topics in designers also and in painters also and further the seminars in the future seminars and all stuff. Okay, so आज का जितना हुआ है सेशन खत्म होने के बाद आप लोग ट्राई कीजिए. आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. अगर आपके Perfect. पास अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. We will reach there and we will try to reply there also at the same time. ओके, बट एक बार आप वेबिनार्स के बाद आप ट्राई कीजिए कि आप उसको एक्सपीरियंस जरूर करें. Okay, if you have softwares, because we bring them things for you guys and it's better ki you should try after the webinar only, at least give 1 hour to that, so it will be great. Okay, so I hope you have enjoyed the session and thank you sir for your time and for your knowledge for sharing with us today. Okay, so I hope we will bring some advanced topic for the students also or for the viewers also from the next Definitely. webinar. Would love to. Yes. Okay, so basically, guys, so before leaving, again, I will say those who have not subscribed our channel, please go and subscribe it. It's compulsory. Okay, you can say that. Okay, and there's a bell icon over there. So आप इसको just press कर दीजिए, आपको notification आ जाएगा. And again, we have another webinar for coming Saturday. So be prepared for that.
Okay, guys, so that's it for today from our side. We will see you again. Till then, bye, take care. Thank you, sir. Bye. Bye, everyone.